use of this and that. अब ये दो वर्ड्स होते क्या हैं बेटा? These two words are the pronouns which help us to point to a person or a thing. It means ये दो words आपको किसी भी person या कोई object की तरफ point करने में help करते हैं. For example, मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाया बैग, राइट? अभी आई एम वेरी क्लोज टू द बैग, मैं बहुत पास खड़ी हूं बैग के. सो आई विल से दिस इज अ बैग. आई विल से दिस इज अ बैग. नाउ यू कैन सी आई हैव गॉन फार अवे फ्रॉम द बैग. दूर चली गई ना मैम बैग से. So what will I say now? That is a bag. I will say that is a bag. Beta, one thing which I want to tell you here, that is this or that हम सिर्फ one thing के लिए use करते हैं, single thing के लिए. ओके, दिस एंड दैट हम सिर्फ वन थिंग के लिए यूज करते हैं. नाउ मैम इज वेरी क्लोज टू द बेड, राइट? बहुत पास है मैम बेड के. तो मैम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? यू टेल मी. दिस यूज करेंगे या दैट यूज करेंगे? एग्जैक्टली माई लवली किड्स, यू ऑल आर सो राइट. आई विल से दिस इज अ बेड. आई विल से दिस इज अ बेड, क्योंकि मैम बेड के बहुत पास खड़ी है ना, इसलिए. बट इफ मैम गोज फार फ्रॉम द बेड, मैम बेड से बहुत दूर चली जाती हैं, ओके, वेरी फार. सो नाउ आई विल से दैट इज अ बेड. आई विल से दैट इज अ बेड. Understood? Now let us take the last example for today. Okay? So I'm standing very close to the door. Ma'am door के बहुत पास खड़ी है, right? So now what will I say? This is a door, right? I will say this is a door. Now what if I go far away from the door? Ma'am door से दूर चली गई, right? Now you all know what you are going to say. You are going to say that is a door. Lovely kids. Amazing. सबको पता चल गया, right? That is a door.